Ji, have you attempted those 10 questions? Yes, majority of them were already done. So जो remaining थे वो complete हो गए. 5 रह गए या 5th रह गए? Oh, from the whole worksheet. I'm talking about the first 10 questions. Uzaifa is saying it's done. So that was the homework. तो आप बताइए any problem in those first 10 questions? कोई problem नहीं. Problem normally तभी आते हैं जब attempt किए जाते हैं तो ऐसा ही है. So I'm expecting कि सब ने attempt किए हैं और कोई problem किसी ने कहीं बताया नहीं है तो इसका मतलब सबसे हो गए. So फिर तो आप बहुत जबरदस्त हो गए coordinate geometry में. चले एक छोटा सा हम कोई क्वेश्चन में देता हूं. सेम उसी वर्कशीट को प्लीज ओपन करें. Open the worksheet and now you have to attempt the question. Are we done with question 12? This one? ये क्लास में हमने तो नहीं किया ना? जी इसीलिए मैंने कहा सिर्फ 2-3 रहते थे वो करने थे आप लोगों को. We haven't done that question. Question 12 मैंने नहीं करवाया. मुझे नहीं याद ऐसा कि आप मैंने करवाया हो क्लास में. वो एक पैराग्राम वाला जरूर था but that is a different. Okay, now attempt this question. This is question 12 of the worksheet. मोबाइल इधर मुझे दे दें. नेट को क्या करना है? तो मोबाइल मैंने कहा दो, नेट नहीं आ रहा, वो सामने वर्कशीट खुली हुई है. जी स्टार्ट क्वेश्चन 12. हियर यू कैन सी द डायग्राम. और आपस में डिस्कस नहीं करना. आप ये समझें कि ये आपका अपना टेस्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. क्या आप को पता चले कि हाउ गुड आर नजर नहीं. क्या पॉइंट्स नहीं क्लियर हो रहे? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. ओके क्वेश्चन 12. हियर इज द डायग्राम. मैं थोड़ा सा ऊपर से कर देता हूँ, यहाँ से मैक्सिमम जा सकता है. ABCD is a rectangle. The coordinates of A and B are given 0, 8, 4, 0. The equation of the one of the diagonal AC is given 8y plus x is equal to 64. You have to find by calculation the coordinates of C and D. G, please start. 7 marks question. You cannot discuss with your friends. Start करें और देखें. Are you getting the right answer for C and D? Before starting the calculation, make a planning in your mind. पहले plan करें इस question को. That will take maybe 2 to 3 minutes. कि how will you reach at C and D? C और D को कैसे catch up करेंगे? So पहले एक mind में एक plan out करें इसको.
Abraham has done that question. Hasnain also. Abraham, Hasnain, Rahim, Ramin Khalid, Mikhail Hassan, they have done. कि आपने एक प्रोसीजर माइंड में सबने बनाया होगा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी. किसको अभी तक मेथड नहीं पता चला कि हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी? वर्किंग डेफिनेटली आप में से कुछ कर रहे होंगे, प्रोसीजर पता चल गया होगा. किसको अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि सी और डी के लिए फाइंड करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? वन स्टूडेंट हियर, इज देयर एनीवन ऑनलाइन जिनको भी मेथड नहीं समझ आया? अगर मेथड समझ आ गया एंड यू आर इन द मिडल ऑफ द वर्किंग, carry on. So see here, Emily, I'm telling you the method how to find the coordinates of C and D. See, get the line, the equation of the line AC is there. You have the coordinates of AB. Can you find the gradient of the line AB? Yes, we can find the gradient of AB. And because it's a rectangle, so these two lines AB and BC are perpendicular. So by using that gradient AB, you can find the gradient of the line BC as well. Once you have the gradient of BC, using that gradient of BC and the point B, we can find the equation of the line BC. Y minus Y1 is equal to M into X minus X1. And once you have the equation of the line BC, and already you have the equation of the line AC, these two lines are intersecting at C. If you solve the equations of line AC and BC simultaneously, you will get the coordinates of C. ठीक हो गया? And once you have the coordinates of C, there are multiple ways to find the coordinates of D. एक तो आप क्योंकि AB and CD are equal, तो जो X coordinate में change होगा from B to A, same change will be there from C to D. So C के coordinates होने के बाद D के coordinates you can find by comparing.
Okay, you can see the change from B to A. The same change will be there from C to D. So by comparing them, you can find the coordinates of D. आप B और C को, because B, C and AD are also equal, so B, C और AD को भी compare करके you can find the coordinates of D. और अगर किसी ने और मेथड यूज किया है वो ये भी हो सकता है कि D is the point of intersection. D is the point of intersection. I'm telling you other way. D is the point of intersection of AD and CD. But for that, you need the equation of the line AD and CD, जो कि कर सकते हैं आप, मुश्किल नहीं है, but थोड़ा lengthy हो जाएगा. हो सकता है उधर से भी. And one more way. If I draw the line BD, if I draw the line BD, this one, both diagonals are intersecting each other at this point. ये देखिएगा, एक मैं और मेथड बताऊंगा to find the coordinates of D. You have the coordinates of A, you have the coordinates of C. So you can find the coordinates of midpoint. By using the coordinates of A and C, you can find the coordinates of midpoint M. And once you have M, M is also the midpoint of B and D. So दोबारा midpoint formula use करके you can find the coordinates of D. या comparison say B to M and M to D, you can find the coordinates of D. So once you have C, there are multiple ways to find the coordinates of D. Who did not get how to find the coordinates of C? क्योंकि D के तो मल्टीपल है, उनमें से कोई एक तो समझ आ गया होगा. C का किसको नहीं समझ आया? नहीं, आंसर तो एक जैसे होंगे. आंसर तो जिस मर्जी मेथड से करें, आंसर तो एक जैसे ही होंगे. अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो नहीं, सबके डिफरेंट अगर आ रहे हैं तो सबका ठीक नहीं है, किसी एक का ठीक है, फिर वो मिस्टेक कर रहे हैं. ओके, टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? 16, 6. So everyone is getting the same answer for C. तो D के डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? C अगर ये है 16, आप बताएं दानियाल किस मेथड से किया आपने D? ओ अच्छा, फिर AD की फाइंड की और साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. टाइम काफी लगा होगा. ठीक, बस होना ठीक ही है. CD का ग्रेडियंट वही होगा जो AB का ग्रेडियंट होगा, और पॉइंट C you will use to find the equation of CD. The gradient of AD and the gradient of BC is same, parallel. You will use A, y-intercept is there, so you can have the equation of AD. उनको simultaneously solve करने से you will get the coordinates of D. Quick calculation mistake फिर हो सकती है. But the easier way is to find the coordinates of M by using A and C. Once you have the coordinates of M by using A and C, M is also the midpoint of B and D. So what are the coordinates of D then? क्या है आपके आंसर? 12, 14. 12, 14. G, is that clear? Yes, you can. We'll do that. I'll do that question. अभी नहीं, अभी ना करें. वैसे तो रिफ्लेक्शन है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है. If this is a line and this is a point A का opposite C रिफ्लेक्शन है तो AC वो लाइन जो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो डिस्टेंस उनका इक्वल होता है. बट आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन. यस, अच्छा 21 है ये. Okay, let's do question 21 now. Question 21. Hussein is saying that this is a tricky question, so let's attempt that question now. From the same worksheet. अभी वो मैंने equation of circle वाली भी एक worksheet भेजी है, but अभी हम उसको नहीं start करें. We'll do after this. Okay, start question 21. The different thing is here कि आपको you need to sketch the diagram yourself. और थोड़ा सा नहीं, काफी O level का knowledge use होगा. 21.
Question 21. The point R is the reflection of the point -1, 3 in the line 3y plus 2x is equal to 33. Find by calculation the coordinates of R. No discussion. खुद करना है. और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा. ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, तो इतना इजी ना लें. So just one question. So the reflection and the absolute point will be At equal distance. perpendicular. Yes, they are perpendicular. If I say this is the reflection line, if this is a point A, the image of A is B here. So AB line will be perpendicular to that line, reflection line के. और डेफिनेटली जब डिस्टेंस उस लाइन से इक्वल होंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा. In the line. No. In the line मीन जिस तरह वो कहते हैं इन द एक्स एक्सिस. अगर ये एक्स एक्सिस हो, एक पॉइंट ये है, आर यहाँ पे तो -1, 3 यहाँ पे है. सो दैट इज द रिफ्लेक्शन लाइन. वो पॉइंट आर और -1, 3 दोनों उस लाइन के ऊपर नहीं है. Okay, should I make a sketch here? See the reflection line is given 3y plus 2x is equal to 33. Suppose करता हूँ कि वो ये line है. Say this is a reflection line. He is saying point R is a reflection of -1, 3. नहीं, solve टेक्निक समझ आ गई है. जिनको मेथड समझ आ गया वो स्टार्ट करें, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए हैं कि उनको स्केच नहीं आइडिया हो रहा कि कैसे, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि वो स्टार्ट ले सकें कुछ. Point R and -1, 3 are the reflection of each other over this line. Point R is the reflection of point -1, 3. Say this is the point -1, 3. And you did reflection in O level. अगर ये point हो यहाँ पे, इसका reflection कहाँ बनेगा? Exactly opposite at the same distance. Reflection, mirror line अगर हो तो आपका image बिल्कुल exactly opposite. So this point जो मैंने spotlight से show किया है, this is your R. Both points -1 and 3 are the reflection of each other. Now if you join them, क्योंकि दोनों के distance आपस में equal होते हैं, the distance of object and image from the reflection line, they are equal, and because exactly opposite बनता है, so that the line, that line and the given line both are perpendicular as well. Now find R. This is a sketch, not the accurate drawing.
ज्यादा क्या है? नहीं, मेजोरिटी के 7 मार्क्स लूज होंगे। आप कह रहे हो सिंपल है, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा। Rehan, if you have the worksheet, you can see the answers are written at the end. मैं अगर नीचे लेके जाऊंगा तो फिर वो ये डायग्राम चेंज हो जाएगी। Yes, what did you get? 7-3, 7-15. So हमें यही लग रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है और मैथ्स भी बहुत इजी है, और यही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हमें मार देगा। देखें ना, क्वेश्चन आए और पता ही नहीं चल रहा हो भी कैसे, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब आपकी ये प्रैक्टिस ने, आप अगर यहीं पे हम स्टॉप कर देते कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमें आ गई है, तो फिर यही क्वेश्चन एग्जाम में होता तो आप में से 60% शायद ना कर पाते। सो बेशक आपको लगे कि टॉपिक इजी है, ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चंस करें ताकि न्यू क्वेश्चंस आपको हैंडल करने का आइडिया हो जाए। अब ये न्यू क्वेश्चन इसलिए है, इसमें रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व होगी, और रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट हमें ओ लेवल वाले शायद याद ही नहीं है, पर तो खैर अब भी ऑनलाइन रहे। जी, what method, who will describe the method here to find the coordinates of R? जी Zaki. Yes. Yes. Right. Yes, you are right. You are right. See here, I'm repeating, these two lines, the red line and the black line, both are perpendicular to each other. We have the gradient of the red line, क्योंकि equation जब उसकी line है कि line की है, so we can find the gradient. Now please listen. What's the gradient of that red line? If you make y subject, you'll get the gradient -2/3. The gradient of this red line, if you write that in the form y is equal to mx plus c, you'll get the gradient -2/3. So the gradient of that black line will be +3/2. So इस line का gradient पता चल गया, black line का, and we have one point on that black line and the gradient too. So we can find the equation of that black line by using that point and gradient. Now you have the equations of both lines, solve them simultaneously. If you solve them simultaneously, you will get the point of intersection, ये वाला point. और ये जो point of intersection है, ये -1,3 और R का mid point है. Once you have the point of intersection, you can use midpoint formula to point of intersection 3, 9. Now see the comparison. Yeah, midpoint formula, -1 plus 4 is 3. So 3 plus 4 is 7. 3 y coordinate, 3 plus 6 is 9. So 9 plus 6 is 15. So the coordinates of R 7, 15. G, is that clear? Any question about question 21? Okay, now open the worksheet of equation of circle, जो मैंने अभी आपको WhatsApp सेंड की है, अभी मैं आपको यहाँ पे भी वो शेयर कर देता हूँ।
Okay, worksheet equation of circle. बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बस मैंने उसके कुछ क्वेश्चन जरा अलग रखे हुए हैं क्योंकि वो बेसिकली बाद में वो ऐड हुई है सिलेबस में, मीन 2020 से ऐड हुआ है, तो उससे पहले तो उसके लिए मैंने फिर सेपरेट एक वर्कशीट बना दिया. ओके, हियर इज क्वेश्चन 1 ऑफ दैट वर्कशीट. प्लीज स्टार्ट. I have shared but the क्यों नहीं आ रही. Start question 1. Yes, question 1. The circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 20 is equal to 0 has center C and passes through points A and B. You have to find the coordinates of C. Done? Part 1. जी मैं टाइम खुद देता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि आप खुद अटेम्प्ट किया करें, मैं चाहूँ तो सब क्वेश्चंस करवा सकता हूँ बट आपके लिए उसका कोई फायदा नहीं है. तो जब मैं वेट करूँ इसका मतलब आप अटेम्प्ट किया करें खुद. So coordinates of center mean we know how to find the coordinates of center. We need to complete the square or just -2 and 1. So right square अगर आपने complete कर लिया है तो that is right. You can tell the coordinates by comparing. Now then start B part. For those who did not get part A, see here, x square I have to arrange first. X square plus 4x plus y square minus 2y. I'm going to shift minus 20 on the other side plus 20. If you were here, तो आपको याद होगा कि how we have to complete the square and how to complete the square. Understood है कि अगर कल आप नहीं थे तो ये समझ नहीं आएगा. So this is how to complete the square. It was x plus 2 whole square. And you need to subtract 2 square plus y minus 1 whole square. We need to subtract 1 square is equal to 20. So x plus 2 whole square plus y minus 1 whole square minus 2 square 4 minus 1 square 1. So 5 on the other side. 20 plus 5 is 25. So the coordinates of the center are, change the sign of these two. So if you change the sign of x coordinate, so the coordinates of center are -2 and 1. So center को C से represent कर रहा है यहाँ पे.
So the coordinates of C are -2, 1. He is not asking for radius, but अगर वो पूछता तो radius is 5. We did this yesterday. अगर आप कल नहीं थे, then really sorry. आप notes लें किसी से, अगर आप कल absent थे तो. You have missed a lot then. So C के coordinates आ गए -2, 1. It is given that B part, before B part it is written, it is given that the midpoint D of AB has coordinates 1.5, 1.5. और AB कहाँ पे हैं? They are lying on the circle, mean on the circumference of the circle. Find the equation of AB. ये तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा. You are right. जी, किस को पता चल गया कि बी पार्ट कैसे होगा? Just raise your hand if you know how to do B part. 2, 3, 4. Okay, thank you, hands down. ये तब तक पार्ट नहीं होगा जब तक आपको ओ लेवल वाली प्रॉपर्टी याद नहीं आएगी. ये ओ लेवल जो है ना, और वो कल प्रॉपर्टी हमने की है. जी स्केच करता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए. If you sketch a circle here, say this is a circle, its points A and B are here. Say this is the point A and this is the point B. And the coordinates of C we already know. The coordinates of C are, they were -2 and 1, I think. He's saying D is lying on the midpoint of AB. If I join AB, so D is here. This is the point D. And the coordinates of D are 1.5, 1.5. We have to find the equation of the line AB. Equation of line find करने के लिए we need one point on that line and the gradient. We have one point D. Gradient कहाँ से आएगा? Yes, we did this property. Last property was this one. कि if we C से अगर हम ये line D तक draw करें, and because D is the midpoint, so these two are equal. So if a line from the center is bisecting the chord, अगर center से एक line chord को bisect कर रही है, it means that line is perpendicular to that chord. ये अगर कोई line center से perpendicular, it means it is bisecting, and vice versa is also true. If a line from the center is bisecting, ये bisect का कैसे पता चला मुझे? क्योंकि D उसने कहा था midpoint है. तो अगर ये midpoint है तो इसका मतलब CD is bisecting the line, bisecting the chord AB, and if it is bisecting, then it will be perpendicular. So CD is perpendicular to AB. Using our O-level symmetric properties, angles की symmetric properties. अब क्योंकि perpendicular हैं, तो C के coordinates we have, D के coordinates भी हैं, so by using the coordinates of C and D, we can find the gradient of the line CD. और gradient of the line CD होगा, उसका negative reciprocal will be the gradient of the line AB. And once you have the gradient of the line AB and the point is already there, you can find the equation of the line AB. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. किसके लिए? किस पार्ट के लिए आप कह रहे हैं? लेकिन सी पार्ट अभी हम नहीं करेंगे. सी पार्ट अभी हम नहीं करेंगे. We can do only A and B part. अभी जो लिखी है
कल मैंने प्रूफ बताया था कैसे आई है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको लगता है जो कल हमने 1 आवर में किया था वो इधर हम आपका ए लेवल उसी वक्त खराब होगा जब या तो इसको आप बहुत इजी लेंगे या आप इर्रेगुलर होंगे। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। मैथ इतना मुश्किल नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं होंगे, एक दिन छोड़ के आप समझेंगे अगले दिन समझ आ जाएगा। अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है। ये तो अभी अगर किसी ने कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कोई एक लेक्चर मिस कर दिया था अगर सर्कल के अलावा तो कोई इश्यू नहीं था, चल सकता है। लेकिन आगे वाले लेक्चर्स, एक आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, एक लेक्चर मिस हुआ अब वो कुछ समझ नहीं आना नेक्स्ट डे। जी ऐसे ही होगा। सो इनिशियली जो मिस्टेक्स हो रही है उन्हीं से सीखें, आगे तो टाइम भी मिलेगा सीखने का भी। ओके यू कैन डू जी, आप कर सकते हैं, बाकी सब नहीं कर सकते। जिन्होंने एड मैथ नहीं रखा वो नहीं कर सकेंगे। सुने इधर, लिसन, इफ यू आर स्टिल स्टक एट बी पार्ट अगर किसी से अभी नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? यू विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ सी डी। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ सी डी? 1/7 by using the point. So what will be the gradient of AB then? -7. फिर पॉइंट्स यूज करेंगे y minus y1। अगर डेसिमली यूज करना चाहते हैं y minus 1.5 is equal to m minus 7 x minus x1. So you will get y minus 1.5 is equal to minus 7x plus 10.5. So we need to write the answer in the form y is equal to mx plus c. So it will be y is equal to minus 7x, 10.5 plus 1.5 is 12. So this is the equation of the line AB. Now last part मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा उसको, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि वो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी की नहीं है। क्वेश्चन सी पार्ट इज, जी अब्राहिम, do you want to ask something? So I was just gonna say how to solve it. So what? I was just gonna explain how to solve it. No. Oh, I okay, don't have any okay. questions. So basically, see here, C part सिर्फ समझ लें। वो कह रहा है find by calculation the coordinates of A and B. A and B अगर देखें तो एक लाइन AB है और एक कर्व है। A and B, point A and B is the point of intersection of a line and a curve. A and B, line AB है और कर्व भी उसी में से पास कर रही है। So point A and point B are the point of intersection of a line and curve. You already know कि how to find the point of intersection of two lines. आप उन्हीं two lines को equations को simultaneously solve कर देते हैं, equate कर देते हैं, so you get the point of intersection. So same method here. If you want to find the point of intersection of a line and curve, you have to solve the line, the equation of the line and the equation of the curve simultaneously. अब वो solve कैसे करते हैं वो अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जी बोले। लेकिन AC की इक्वेशन कैसे आएगी? वो भी नहीं होगी ना जी। आई एम रिपीटिंग कि A or B is a point of intersection of the line and the curve. So you will solve the equation of line and the curve simultaneously. You will get the point of intersection, and the point of intersection are A and B. But अभी तक हमने we haven't learned कि how to solve a linear equation and a non-linear equation. हमने O level में सिर्फ 8th क्लास में linear equation को simultaneously solve करना सीखा था। इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेकिन क्वाड्रेटिक भी तो नहीं किया ना। एड मैथ में आपने किया है ना, लेकिन बाकी ने तो नहीं किया हुआ। तो मुश्किल नहीं है ये सॉल्व करना, बट ये हम करेंगे। लेकिन अभी सिंपली वी आर लिविंग दिस पार्ट सी। है क्या आंसर्स क्या है?
वो मैं देख के बता दूंगा. Okay, please listen now. Listen. Note down the homework. Okay, you want the answers for this. इसी शीट के नीचे मैंने आंसर सारे लिखे हुए हैं. Here you can see the answer of question 1. Okay, homework is the coordinate geometry worksheet. Not this one, ये जो अभी कर रहे हैं. Equation of circle और नहीं, coordinate geometry की worksheet में question 11 से लेकर question 25 उनमें से भी हम काफी कर चुके हैं. आप देखेंगे. चले 5 अगर किए हुए तो 10 क्वेश्चन एक दिन में करना. आपने ए लेवल का मैथ रख लिया तो फिर छोड़ दें उसको. कल हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. सर्कल वर्कशीट नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स टुमारो. आप ये अटेम्प्ट करके आइएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.